Namaskar and Hari Om to all. My name is Vivek Hardas. I am a student of Chinmay Mission's Balvihar Goregaon branch. Balvihar is the brainchild of Swami Chinmayanand. Its aim is to introduce our culture and inculcate dharmic values in children. Bhagavad Gita chanting is the salient feature of our weekly Balvihar sessions. Today, I am here to chant select shlokas from chapter 2 of the Bhagavad Gita as a part of Project Saarathi. Project Saarathi is a collective attempt to introduce the Bhagavad Gita to 100 families. Thus, we continue on the path shown to us by Pujya Gurudev Swami Chinmayanand, who dedicated his life in spreading the glory of the Bhagavad Gita across the globe. Hari Om, Bhagavad Gita chapter 2. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि बाणो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि
येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं Hari Om, Essence of Bhagavad Gita, Chapter 2. The essence of the Bhagavad Gita unfolds in the second chapter called Sankhya Yoga, or the Yoga of Knowledge. Second chapter is probably the most longest of all the chapters because the Lord Himself tells us about many perspectives and truths of life. This chapter opens our heart and minds to all the answers any human is looking for his spiritual development, like knowledge of the self, that is Atman, theory of reincarnation, duty of one and all, which is work for the sake of work, reason of all sufferings, that is materialistic attachment, enemies of mankind, that are lust, anger and greed, solution for all problems, which is renunciation and detachment, science of action, work without attachment towards the result, and disposition of an enlightened being. The chapter begins with the dilemma of Arjuna and concludes with the description of a man of perfection. At the beginning of the chapter, Sanjaya gives a complete picture of Arjuna's mental state to Dhritarashtra, which is overwhelmed with sorrow for his near and dear ones. Arjuna did not know whether he should fight, although fighting is the duty of the Kshatriyas, or whether he should refrain from killing them in the battlefield. Arjuna's state of mind could be due to a sense of desperation. This is what happens to most of us when confronted by unimaginable problems in our day-to-day life. When hysteria attacks, intellectual composure is destroyed and resulting confusion leads to inefficiency and ultimately to failure in life. Arjuna completely surrenders to Lord Krishna as a student and requests for guidance by saying, Shishyate aham, meaning I am your disciple. Verse 11 of chapter 2 is essentially the beginning of Bhagavad Gita. Chapter 1 and the first 10 verses of chapter 2 are used to build a background for the Gita. Verse 11 explains that sorrow arises out of misunderstanding and self-realization is the only way to overcome sorrow. The chapter further states that discrimination between the real and the unreal is called wisdom, and wise men do not grieve because they can discriminate between the imperishable soul and the perishable body. The body ever perishes, therefore it is not to be grieved, while the soul never perishes, and therefore it is also not to be grieved. One is grieved only because of lack of wisdom and discrimination. Lord Krishna explains that just as there is no grief when one discards old worn out garments and there is joy at accepting new garments, in the same way the embodied soul, discarding old worn out bodies, joyfully accepts new ones. Thus Krishna explains the basic principle that there is no instrument that can hit or destroy an element subtler than itself. Atma, being subtler than the subtlest, it cannot be changed by any other elements such as air, water, fire or earth. This is the gist of the second chapter in brief. जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिया कमल विहारी
ज्ञानविकासिनि विद्या ब्रह्मकरा। ॐ जय भगवद्गीते। निश्चल भक्ति विधायिनि निर्मल मनहारी। शरण रहस्य प्रदायिनि सब विधि सुखकारी। ॐ जय भगवद्गीते। राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा। भवभयहारिणि धारिणि परमानन्द प्रदा। ॐ जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनि नाशिनि समरजनी। दैवी सद्गुणदायिनि हरिरसिका सजनी। ॐ जय भगवद्गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ॐ जय भगवद्गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। ॐ जय भगवद्गीते। ॐ जय भगवद्गीते। मैया जय भगवद्गीते। हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ॐ जय भगवद्गीते। ॐ जय भगवद्गीते। ॐ जय भगवद्गीते। आज इथे विवेकने खूप छान गीता म्हणून दाखवली आणि ऐकताना त्याचं जे निरूपण होतं ते तर खूपच सुंदर होतं. त्याच्यातनं आम्हाला शिकायला पण मिळालं की मिसअंडरस्टँडिंग जर काही असेल तर ते आपण लगेच क्लिअर करून घ्यावं, म्हणजे आपल्याला जास्त दुःख होत नाही. खूप छान संदेश दिला त्याने आणि मला खूप आवडलं आणि मी माझ्या मुलाला नक्की सांगेन की तू पण गीता शिकून घे. शिकशील? हा. व्हेरी गुड. विवेकनं छान गीतेचं निरूपण केलं. उच्चार पण छान स्पष्ट होते. आम्हाला सगळ्यांना खूप आनंद झाला. नातवाला पण मी त्यात प्रोत्साहन देईन की त्यानं पण पुढं गीता शिकावी.